So, Mekin, good morning. Good morning, Raj. Very happy to be speaking to you today. It has been a while since we have been speaking about Prayaas Collective, Prayaas 2023, 2024. So, I'm happy to be here today to speak more about it, what it is all about. Likewise, I am excited to get to know you and actually ask you some interesting questions for both myself कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, but also I feel like the audience learning from you would be fantastic. So I am excited. Sure, let's get rolling then. Let me play interviewer for a little Okay. while and ask you, कि Raj, like, who is Raj, right? And what led to Raj starting Lend a Hand India? Who is Raj? Wow, that's a very reflective a question. No, I think I would say born and brought up in a small town, Panvel. It was a small town at that time. Son of a grocery store merchant, and growing up going like any normal kid in that. But along the way, many interesting experiences like working with my dad, selling kirana mal, many life experiences outside of the sort of school as in the school, and learnt a lot through the, all these experiences. So education happened along with Education schooling. really happened outside of the school as compared to inside of the, Yeah, four walls. And in the process, then ended up working in technology, in marketing, in finance, and finally, I think my full-time passion now, which is Lend a Hand India. तो ये finance, technology, marketing समझ में आता है, but like from that world, like how did Lend a Hand India happen? So I think I must blame or credit, my 3/4 better half Sunanda for that. And originally it is actually her idea and her baby, and all. And you can say that like a typical husband, claiming credit for all the good work done by their spouse. I am one of them, as well. So it's a completely brainchild of Sunanda here. But I was there being a husband, and it's like passive smoker, that if you're living with somebody who is into development field and speaks and breathe and drinks development, then it also, the whiff comes on you as well. And that is how I sort of started to learn more about development sector. I used to work with Deloitte Consulting at that time, and then followed by Citibank. And that's when we started Lend a Hand India in sort of New York. And the idea was, both of us, me and Sunanda, come from lower middle class family. We worked hard. Of course, there was luck involved, but many people helped us to get where we are, where we were there at that time. And our idea was that what can we do something so that we are able to sort of, I think giving back is a very, very I think jargonish word, in that. It is more that you just want to feel good about yourself in a very selfish way. So you're doing something, right? And in the process, maybe some people are benefiting, if at all, in other ways. But I think it starts with you. So idea of Lend a Hand, the name itself, as it suggests, that the enemy, many people like, what we were earlier, trying to work hard and make it in the world. How do we provide whatever is needed, support or just little nudge or just little support to them, which can then make it through for them. But what about Udhyam? Tell me more. Very much like you, first a little bit about myself. Grew up in mostly small towns. Jaipur was the largest town I lived in, which was also where I was born. But Jaipur, then Udhampur and Jammu and Kashmir, a small place called Rishra outside of Calcutta, then Jamshedpur. So my childhood was every 3 years moving to a new place, new schools, new friends. So जहाँ भी थोड़ा comfortable हुए, it's like lift and drop to a new place. But I think it ended up shaping me and for life. Did my engineering and हाँ मतलब धंधा करना तो नहीं सीखा इंजीनियरिंग में, लेकिन क्लास के बाहर ही रहता था. Became the head of the student body. कौन सा इंजीनियर वैसे क्लास में रहा है?
I think became the head of the student body in my first year. Right? मतलब I was elected as the head of the student body. I'm like, इतना अच्छा तो दिखता नहीं हूँ मैं. How can I get that kind of a popularity vote? But I think हाँ थोड़ा भाषणबाजी and generally just trying to कीड़ा था कि कुछ करते हैं. So did a lot in college. फिर joined the internet industry right from college, and I think that shaped me a lot. कि Yahoo join किया था, फिर उसके बाद mostly stayed in the internet world. तो technology, internet, data, users, ये सब कुछ सीखने को मिला. तो Yahoo, a startup, and then I think अभी भी लोगों के लिए my one line resume remains कि अच्छा इसने Flipkart में काम किया. तो got lucky 2009 में when we were in a 2-bedroom house. जॉइन फ्लिपकार्ट कि हाँ टेक्नोलॉजी टीम को लीड करो. बहुत मज़ा आया और बाहर निकलने के बाद लगा कि ओह ये क्या हो गया. मतलब डिडंट रियलाइज हाउ बिग इट वाज और व्हाट वी एंडेड अप क्रिएटिंग. ओनली रियलाइज इट आफ्टर आई स्टेप्ड आउट दैट as in it had by the time I left we were a 35,000 people company, sold for some $22 billion, now probably valued at $50 billion. So that much value creation. And again for me the joy was the kind of people who came together. Right, लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आया. तो फिर बाहर निकलने का ख्याल कहाँ से आया? इतना मजा आ रहा था तो. I think जब 35,000 लोग हो गए थे ना तब बहुत थकान लग रही थी. Like it was hard. It's like the kind of challenges you have to solve instead of creating new things. And वो जो कॉलेज में इनिशिएटिंग वाला था वो सब चला गया था. तब you had to manage and maintain. And I think that is what caused the initial thought कि अच्छा कुछ और देखते हैं. But then when I started thinking I was like कि hey अभी तक तो जो सब किया वो मतलब as a middle class boy you have to earn money, you have to be successful in your career, वो सब किया है. What are your goals? तुमको क्या करना है? Right? I think that's a dangerous question. So what do you want to do? That question led me to कि अच्छा यार लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता है तो मे बी एजुकेशन कुड बी एन एरिया. तो देन स्पेंट अबाउट अ ईयर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एजुकेशन. और फिर उद्यम शुरू कर लिया कि हाँ कुछ करते हैं मज़ा आएगा. सो दैट्स व्हाट लेड टू उद्यम हैपनिंग कि व्हाट आई फेल्ट मतलब जब 1-1.5 साल एजुकेशन को समझने की कोशिश कर रहा था कि यार हम सिर्फ किताबों में घुसे हैं. राइट, द डिस्कनेक्शन बिटवीन बुक्स एंड द रियल वर्ल्ड. And this thing ki we don't ask the children what they want or the youth what they want and what they want to do. We just keep telling them तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुम like this is good for you. Like who are we to decide for them? So that is what led to उद्यम कि नहीं कुछ तो करना चाहिए. I don't know क्या होगा, क्या कर पाएंगे, but शुरू तो करते हैं. Yes. It's like मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग पूछते हैं कि लिंडा हैंड इंडिया का मिशन स्टेटमेंट क्या है. तो बोलता हूँ we'll figure it out. जो भी बात आई आज सुबह ये हुआ, आज ये करना है तो we'll figure it out and go from there. And ये भी है जब भी मैंने सिटी बैंक छोड़ने का वो ख्याल तब भी आया जब एक कोई HR का वर्कशॉप चल रहा था कि आज हमें इस साल हमें कितने एनुअल बोनस मिलने वाले हैं. एंड ऑल दैट. एंड I was sitting next to a colleague and we started thinking that what is this all about, and then it made me wonder even if I come out with some exotic product and if Citibank makes say $1 billion more, so what, and I think that so what kept on bugging all the time. And that is when probably, of course it took 5 years for me to quit and all, but the origin of that I want to go full time on this started with that in that. And the focus of Udhyam, tell me little like what exactly Udhyam is busy with that. हाँ तो I think 2 चीज़ें करते हैं उद्यम में. एक work with young people and work for young people so that they have opportunities to like exercise their agency and be a little more entrepreneurial. उनके मन में क्या है to like for them to express it in action, like in doing. That can they do stuff in the real world which they want to do in groups. So students doing business projects is in some sense like the core of what we do. उसके लिए there is a curriculum that helps them get more prepared, etc., which is integrated inside classrooms.
सरकारों के साथ काम करते हैं so on, but the core essence is young people doing more in the real world with their own choice. और थोड़ा सा comfort zone से बाहर कि हाँ जो आता है उसके बाहर क्या कर सकते हो. तो ये करने की कोशिश करते हैं. This is what we call उद्यम शिक्षा. With उद्यम व्यापार the intention is to work with small business entrepreneurs, जो ठेले वाले हैं, जो street vendors हैं या rural entrepreneurs हैं. What can they do to grow? Right? तो उसमें कुछ चीज़ें ट्राई की हैं. The one thing that has worked at somewhat scale is जो इस्त्री करते हैं, प्रेस वाले एंड प्रेस वालियाँ, अधिकतर जगह कोयला यूज़ करते हैं. सो हेल्पिंग देम शिफ्ट फ्रॉम कोल टू एलपीजी. दैट इज़ वन थिंग जो कुछ 6,000 एंटरप्रेन्योर्स हैव बीन एबल टू मेक दैट ट्रांजिशन एंड फील गुड अबाउट कि उनकी हेल्थ बेटर हो रही है और प्लस उनकी इनकम बेटर हो रही है. सो अबाउट 30% इनकम इंक्रीज. तो ये दो चीज़ करते हैं. इंटेंशन इज़ फॉर more and more people to be more entrepreneurial, right, and have more control of their own life. वो intention है. अब उसमें क्या कर पाते हैं, let's see. What is up with लाही अभी क्या कर रहा है? आप किन चीज़ों में busy हो? हाँ, तो Lend a Hand India वैसे तो I think the main focus has been कि how do we bring skill education, vocational education as part of the mainstream school. क्योंकि यूजुअली ऐसे माना जाता है कि वोकेशनल एजुकेशन इज ओनली फॉर द बैक बेंचर्स, ओनली फॉर द sort of those who are not academically inclined, only for the poors of the country and not for the masses. Sorry, not for my own son or a kid. It is only for my maid's son. So the focus has been कि how do we sort of change the narrative around vocational education, that it is as much about vocation but as much about applied learning as well. कि अगर आपने गार्डनिंग सीखा तो बायोलॉजी अच्छा कर पाओगे, आके कार्पेंट्री सीखा तो आप ज्योमेट्री अच्छा करोगे. इफ़ यू लर्न इलेक्ट्रिकल वायरिंग देन यू विल बी डूइंग बेटर इन फिजिक्स. नहीं तो मुझे तो अम्स लॉ अभी तक समझ में नहीं आया, इवन तो 4 साल इंजीनियरिंग का खत्म कर दिया. सो आइडिया इज दैट वॉट एवर वी आर लर्निंग इन द स्कूल, हाउ डू वी मेक इट मच मोर अप्लाइड, हाउ डू वी सॉर्ट ऑफ ब्रिंग इट इन टू द रियल लाइफ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट इनटू इट. नहीं तो हम फोटोसिंथेसिस सीखते रहते हैं लेकिन पता नहीं कि एक पत्ते को कभी we haven't even touched a single leaf in the life, and how do you bring it together. And then it also, like to your point, Mekin, you mentioned making choices, but do you have enough information to make the choice, right? So by doing this variety of things, you'll be able to say that this is what I like, and more importantly, this is what I don't like. You know, it's like engineering me. Within 6 months, I knew that I didn't want to go for engineering. But then it was too late, by the time. So similarly, that's the whole idea, that how do we, in the typical school year, how do we integrate that into the curriculum? And the life has, you can almost say after 15 years of work, it is almost like a dream come true with the National Education Policy 2020 now, and the National Curricular Framework which came out now, in which now the vocational education or skill education is going to be mandatory up to grade 10. So it will have its own place as a 100-mark subject. And just to give an idea, math is going to have 130 hours per year, and vocationally will have 110 hours. So that is how critical it is going to be. So I think it's almost like it is going to be reimagining Lend a Hand India going forward, that how do we take this from about 15,000 schools today to over 200,000 schools in coming years. So life could not be more exciting. In that. No, I want to pause here. I think this is a big moment, right? I feel for people who start out in the hope of making change, and change almost always feels very, very hard, right? So to see what Lend a Hand India has achieved, right? वो 15 साल की journey में to be able to help create national policy where vocational education becomes mandatory, I hope serves as inspiration to all the change makers who are thinking about कि भाई कुछ करना है, right? And there are enough people telling us कि नहीं होगा, right? Change won't happen. But here is an example of how change has happened and how, and अभी भी काम बहुत बाकी है, but to get to this point is massive. And
big congratulations to you. Thank you. And to the Lend a Hand India team. In fact, I तो tell my team की picture तो भी बाकी है. अभी तक तो trailer trailer देखा है हमने. In fact, that's a good segue to our to next thing I wanted to discuss was about Prayaas, because I think as you mentioned, we are at a cusp of another sort of breakthrough at the country level as a youth, as the aspirations of the country and otherwise, and I think the movement cannot be more opportune than to look at Prayaas as what it is all about. So about 2 years back, right, I think 2022, just after COVID, and I think COVID in some sense shocked all of us a little bit. Right? Schools were starting to get back, etc., and we were starting to get doing what Udhyam does. And that's when the thinking about, there is one part of the problem that maybe Udhyam is trying to solve or work on. But if I look at it from a young person's life or a young person's point of view, I don't think we are serving everything or we are even understanding. And then before understanding, even listening enough. I think that realization is what led to Prayaas ki can we start listening, understanding and thinking and solving for young people together as a country. I think in many conversations with many of my friends and elders, किसी भी प्रॉब्लम की बात करते हैं ना इंडिया में, तो फर्स्ट आंसर इज़ कि यार हमारी पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है ना, क्या करें हम लोग. मतलब वी आर ट्यून टू ट्रीट आवर पॉपुलेशन एंड आवर यूथ पॉपुलेशन एज अ लायबिलिटी. I felt कि भाई ये young लोग, मतलब this youth population can be a superpower. In fact, I completely agree with you because normally हम बात की शुरुआत ही ऐसे आजकल के बच्चे in that and all in totally discounting कि आप आजकल के बच्चे are probably 10 times smarter than what we were. Exactly. And it is matter of how do we actually make sort of give them what they need to achieve the full potential. Could not agree more with that. Yeah, so exactly this disconnect ना कि भाई मतलब on one hand the popular narrative is कि हमारी आबादी हमारी प्रॉब्लम है, आजकल के बच्चे ऐसे हैं. On the other hand, like having worked with some of these young kids for last 7 years, I am amazed by what they can do. So I feel कि we have to find ways to help these young people do what they can do and like be the support for them. And I'm not seeing that happen. I don't think Udhyam alone can do it or any one organization can do it, which is what led to कि प्रयास कोशिश करते हैं. Right? Let's bring all of us together. So bring the youth along with everyone who's interested in the youth, who wants to work with the youth. सबको साथ में लाते हैं, देखते हैं क्या होता है. Which is what was Prayaas 2023. कि we brought young people together. We brought about 200 odd organizations that were working with youth together and see what happens. And I think from at least being able to shine the spotlight on the problem statements and like really listen to young people. मतलब वहाँ पे जो युवाओं की आवाज़ थी, right, and जो बुलंदी थी उसमें, I think वो सुनने को जो मिला, I feel like that was brilliant, at least in terms of understanding the problem statement. So that at least made us feel कि हाँ ये ज़रूरी है. This needs to happen more. I hope we can also work together, जिसकी कोशिश हमने थोड़ी की, but इसको regularly करते हैं हम. और ये it was very clear from the beginning कि ये उद्यम का initiative नहीं है. This has to become a community of itself and a collective which then can run on its own. उद्यम के साथ शुरू हुआ, but that is where we want it to be. Is it's a collective on its own. That's a good representative of young people and of other people who are wanting to work with young people. So that is what led to Prayaas. It's a good segue to maybe ask you what prompted you and Lend a Hand India to join Prayaas for this year's edition and for Prayaas from here on, and what is the vision for Prayaas this year? Very selfishly,
I just enjoy hanging out with you, Mekin, you know. So I thought that this is a good excuse that Mekin is very busy guy otherwise, you know, and Prayaas वगैरह join किया तो, you know, अच्छा रहेगा. I can have my, you know, 2 moments of fun with Mekin. I think, I mean, see, if you look at the work being done in education landscape today, a lot of focus on primary education. Yeah. And for obvious reasons, a lot of focus on tertiary education. We don't need to go into why, you know, and all that. Yeah. But if you look at the age group of 14 to 18, or say grade 9 to grade 12, that's where you can literally count on your hand, you know, how many organizations are working on that, right, in the first place. So, so the motivation has been that either one Lend a Hand India or one Udhyam or one something else is not going to be sort of enough for us to especially bring the spotlight on secondary education, Yeah. you know, in that. And this is going to be a good collective effort for all of us to come, you know, together to do what we can. And at the end of the day, you know, when like you said 15 years back when we started with Lend a Hand India and this all focus on vocational education and otherwise, still there is not any other organization which has sort of, you know, focused, even though it is such a huge need. So then many times you end up becoming termed as an activist, you know, अरे ये वापस आ गए, you know, उनका agenda लेके, you know, or whatever. So basically other selfish, you know, the thing is कि हम अकेला झंडा गाड़ने सी जगह अगर 6 लोग और रहे, then you are not the only activist in the room, right? And then there's a diversity. I mean, jokes apart, there is a diversity of thoughts as well. You know, because otherwise, if you are the only one which is working on it, then it is like हम ही खुद को बहुत शाना समझते हैं कि हाँ, this is my way or highway, आपको क्या मालूम है? So we have been very conscious about that as well, that we need to have more people, you know, like you and, you know, Akshay from Avanti, and I mean many other folks coming together and bring the spotlight, right, on the secondary education 14 to 18 as well. And of course, Prayaas is a great platform to bring it all together. तो मुझे तो लगता है कि not only the NGOs like Udhyam and Lend a Hand India or Avanti Fellows and others, you know, who are working in secondary education, but also the thought leaders, you know, or those who are running think tanks, those who are doing research, everything needs to come, you know, together for bringing, because only me or Mekin, you know, saying something is not going to bring it. But we are going to need the, you know, the vitamin M, the funding, you know, side of it as well. We are going to need the vitamin G, which is more on the government side to come in too. And luckily now more and more with Samagra Shiksha and other things, the focus is coming on that. So I think the timing could not have been more perfect to sort of, you know, that we make this platform to bring everybody, you know, together and contribute whatever we can. Yeah, absolutely. I think it's so my exploration in education started with reading the ASA report, which first was published in 2005, and the Foundation Literacy and Numeracy Mission was announced in 2021. Right, तो हमें 16 साल लगे to realize the importance of foundational literacy and numeracy. My hope is that I think with Prayaas, with Raj and me working together, with Akshay of Avanti, Priya of Antarang, Aditya of Piramal, and the many other organizations that are slowly doing a little bit of work in secondary education for the 14 to 18-year-olds, we can make changes happen a lot faster. And I feel as a country, our time is now, right? That there is so much happening. There are so many areas where we are growing. If we can make some of these foundational changes happen, then the opportunities and access available to majority of the country can make this growth like a lot more joyous and साथ में चल रहे हैं versus कि हाँ, there is a part of India that's growing, that's shining, but then there is a large part of India where the challenges are much larger than the opportunities. So that's been the thinking कि यार ये अभी करना है, थोड़ा urgency है, थोड़ा जल्दी है. You have to get this going. Absolutely. और मुझे लगता है कि Mekin, you know, as we had discussed before, कि problem तो सबको मालूम है. Yeah. Like
पॉपुलेशन डिविडेंड की बात होती है ये वो, तो और एक बार कोई बोला तो मैं तो सो जाता हूँ कि अरे कितनी बार बोल रहे हैं ना इसके बारे में, ये डिविडेंड डिविडेंड, लेकिन सॉल्यूशंस का क्या, राइट? आई थिंक इट इज मोर की प्रॉब्लम तो सबको मालूम है, बट आर देयर थिंग्स विच कैन बी डन, विच आर बीइंग डन, विच हैव बीन डन। तो मुझे लगता है कि प्रयास का और एक प्रयास ये भी रहेगा कि हम ये शोकेस सॉल्यूशंस को कैसे शोकेस करें, क्योंकि वो आगे आने चाहिए एंड ऑल दैट। तो उसके बारे में एक इंटर्नशिप करके लिंडा हैंड इंडिया ने ट्राई किया था, इंटर्नशिप फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ है, काफ़ी फ्रूटफुल भी हुआ है। तो हमारी एक स्टूडेंट है नूरुनिसा करके, तो हम उससे बात करेंगे, जानेंगे कि वो एक सोल्यूशन जो है ये एग्जैक्टली टुवर्ड्स द यूथ वो कैसे हो पाता है, वो हम देख सकते हैं। नूरुनी साहब, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको मिलके अभी। यू आर वन ऑफ माय मोस्ट इंस्पायरिंग यूथ दैट आई मेट। तो आप बताएंगे आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई स्कूल से? मेरा नाम नूरुनिसा मोहम्मद शेख। मैंने 9th-12th मल्टी स्किल किया था। उस समय मल्टी स्किल और रिटेल था। मल्टी स्किल में 4 वोकेशनल सब्जेक्ट थे। उसके बाद 10th के बाद भी मैंने 10th तक वो कंपलसरी था हमें 9th-10th, और उसके बाद 11th-12th मैंने मल्टी स्किल किया। उसके बाद मैंने फूड प्रोसेसिंग किया। फूड प्रोसेसिंग में मैंने 12th में इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप क्या था ये? मैंने जब इंटर्नशिप कंप्लीट किया तो मुझे 18 आवर्स कहाँ पे जो जाके काम करना था, मतलब फूड रिलेटेड। मैंने फूड प्रोसेसिंग चूज़ किया तो मुझे फूड में इंटर्नशिप करना था 80 घंटे की। तो फिर वो 80 घंटे की इंटर्नशिप ऐसी थी कि तुम आज 5 घंटे करो, कल 4 घंटे करो। तो इंटर्नशिप ये कंसेप्ट है। फिर उसके बाद मैंने एज अ होम बेकर के साथ काम किया। उस समय उन्होंने पहले मुझे नहीं कहा, क्योंकि कोविड का पीरियड था, तो तुम सेफ्टी कैसे ये करोगे, और उनके लिए भी ये कंसेप्ट बहुत नई थी, तो उन्होंने पहले मना कर दिया। फिर उन्होंने फिर से मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि इंटर्नशिप क्या है, ये हर कॉलेज में, स्कूल में क्या? तो मैंने बताया कि ये ओकेशनल एक सब्जेक्ट है, लैंड हैंड इंडिया ने वो स्टार्ट किया है। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि ये क्या होता है, मल्टी स्किल क्या है? तो मैंने उनको सारे सब्जेक्ट बताए, फूड प्रोसेसिंग, कारपेंटिंग, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर। फिर उनको ये सुन के अच्छा लगा। फिर मैंने जब ज्वाइन किया तो उनका मोस्टली चॉकलेट का बिजनेस था, तो मैंने वहाँ पे चॉकलेट बनाना, केक्स बनाना, फिर मैंने वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के केक दिया। तो इसके बाद क्या हुआ? इंटर्नशिप आपका हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ फिर? उसके बाद मुझे एक्चुअली मेरा एक ड्रीम था कि मुझे मास्टर शेफ ही बनना है। अगर मैंने होटल मैनेजमेंट में नहीं किया तो मुझे आगे पढ़ना ही नहीं। तो फिर घर पे ये बताया तो मम्मी ने बोला ऐसा नहीं है कि। तो ये कहाँ से शुरू हुआ मास्टर शेफ बनना है वो? ये मैं जब छोटी थी तो ऐसे जब मैं टीवी देखती तो मुझे अच्छा लगता था। संजीव कपूर जब कुछ बनाता था, उसे देख के, उसका एप्रन देख के, उसकी कैप देख के, तब से ये कंसेप्ट स्टार्ट हुई थी कि मुझे मास्टर शेफ ही बनना है। तो ये इंटर्नशिप की वजह से आपको वापस? हाँ, ये हुआ कि इंटर्नशिप की वजह से मुझे कि किसी ने एक्चुअली कि जब मैंने स्टार्ट किया था इंटर्नशिप, तभी मम्मी ने कहा था कि उसे करना है तो करने दो उतने दिन, बाद में वो भूल जाएगी। फिर उन्हें जब पता चला कि उसे करना है, आगे यही करना है, शेफ ही बनना है, फिर मम्मी ने कहा कि दीदी वो लड़की है तो वो कैसे ये करेगी? तो बोलती कुछ नहीं करेगी, वो जो करेगी वो अच्छा ही करेगी। फिर उसके बाद मम्मी के भी थॉट्स में चेंजेस आने लगे। फिर मैंने लैंड हैंड इंडिया के साथ उनके मेरे आगे की इंटर्नशिप 6 मंथ की कंप्लीट की। उसके बाद मेरा होटल मैनेजमेंट में एडमिशन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा। तो लकीली फिर क्योंकि तभी भी वो चैलेंजेस थे, फी का चैलेंजेस, प्राइवेट कॉलेज, और मुझे डिग्री करना था, CAT की डेट निकल चुकी थी। फिर अभी करना क्या है? तो फिर मुझे लाही में से कुणाल सर के पास से पता चला कि पीछे ही गवर्नमेंट का कॉलेज है और उसको फ़ी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ से डिप्लोमा कंप्लीट करूँगी। और फिर मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि डिप्लोमा और डिग्री में इतना फ़र्क नहीं है, बस डिग्री का 1 साल स्पेशलाइजेशन में जाता है और पोर्शन सिलेबस तो वही है। तो डिप्लोमा में भी क्या क्या सीखा और अभी क्या क्या? मैंने फर्स्ट ईयर में इंटर किया तो मुझे बस इतना ही पता था कि किचन में बस बेकिंग और बेकरी एक कंसेप्ट है। फिर मुझे ये नहीं पता कि कॉन्टी होता है, इसमें थाई होता है, इटालियन होता है। अभी भी मुझे पता चला कि ये। फिर मैंने अभी जब रिगंटा में रॉयल ऑर्चिड का ग्रीन लीव्स है ना, महाबलेश्वर में, वहाँ पे ट्रेनिंग किया। तो शेफ़ इतने अच्छे थे कि उनकी वजह से मुझे ये भी समझ में आया कि नहीं, क्वांटी का अगर आपको प्रॉपर टेस्ट पहले से पता है तो आप अच्छे से ये कर सकते हो। तो अभी आगे क्या? ये तो काफ़ी अभी 2 मंथ के बाद प्लेसमेंट है मेरा। फिर अच्छा। 2 मंथ के बाद प्लेसमेंट आगे फिर मुझे बेकरी में अगर वैकेंसी मिलती तो मैं बेकरी कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो कॉन्टिनेंटल में। वंडरफुल स्टोरी अनुनिसा, जिसकी शुरुआत आपके 5th स्टैंडर्ड के ड्रीम से हुई, फिर आपने 9th मल्टी स्किलिंग किया, आपको पता चला, और बाद में इंटर्नशिप करके अभी आप होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर रही हो। तो वंडरफुल स्टोरी, जर्नी, and congratulations to you and best of luck for the coming time. Right? Thank you.
So Raj, I have also heard you talk very passionately about, I think, one of the solutions that we are showcasing in this Prayaas, which is the HCL TechB solution. Do you want to tell people why are you so excited about this solution? Like मैंने बताया कि I'm a product of a work in integrated higher education. So I think HCL TechB is of course a much more organized, and much more sort of thought through version of it. And we like it because it brings everything together. क्योंकि हम कितना भी ये बोले कि डिग्री का कुछ यूज नहीं है, एजुकेशन इज यूजलेस, यहाँ तुम और मैं और एवरीबडी एल्स, everybody has a degree, right? Yes. यानी इतना बोल के नहीं, बात डिग्री तो है. So that means that is a social reality, Yes. and मैं तो जोक करते रहता हूँ कि डिग्री नहीं होगा तो लड़के को लड़की नहीं मिलेगी, लड़की को लड़का नहीं मिलेगा. That is how तो डिग्री शादी के लिए चाहिए. reality is that in that. So that is one part. We cannot run away from that, as much as we want कि education is useless बोलते रहते हैं, लेकिन that is a reality. ऑन द सेकेंड हैंड ये भी रियलिटी है कि डिग्री के बाद जॉब नहीं मिलता, क्योंकि मेरे ऐसे यूजलेस इंजीनियर्स होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर कर लिया लेकिन एक बार सोल्डरिंग तक नहीं किया 4 साल में, एंड ऑल दैट. तो उसका भी कुछ मायने नहीं है. एंड इनफैक्ट दैट इज अ डबल वैमी बिकॉज दे इन्वेस्टेड 4 years so much of money, time and all that. And many times then in fact the parents have been telling us कि तो डबल वैमी है, वो तो 12वीं पास ही अच्छा था क्योंकि इंजीनियर बन गया तो कुछ भी काम करने के लिए तैयार नहीं और यूजलेस हो गया. तो आई थिंक programs like HCL TechB, which is like they are taking 12th pass students, only requirement is that they should be able to have a math as a sort of subject, whether you're art student, commerce student, science, it doesn't matter. And with the with the aptitude test and other things too, they take you as a trainee. And there is a 1-year training program, and they're tied up with universities like MET, BITS Pilani, Shastra. So along with those 4 years, you are attached to those one of the academic institution for your degree. You are at the client side of HCL, going and learning the whole hard work and what it goes through in the coding and working on the client side. You are being paid stipend, at the time as well. So compared to your batchmates, जो 4 साल के बाद जो भी डिग्री प्रोग्राम करके सोच रहे कि अभी हम आगे क्या करेंगे लाइफ में, यहाँ पे हम ऑलरेडी 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया. वर्क पेरेंट्स के साथ आपको कुछ यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट, बिकॉज 10-15 हज़ार रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है आपको. And thirdly, लड़कियों के लिए, I think what I'm most passionate about is opened up doors for so many girls to pursue engineering as a career, to software as a career, and that too not dependent on anybody else, and chart their own, path. और मुझे तो कहने में बहुत खुशी हो रही कि my own niece joined HCL TechB program. Oh, lovely. 3 weeks, 3 weeks back, and I thought कि that was my own way to contributing, to the cause. Yeah. लेकिन ये जरूर बताना चाहूँगा कि 4 महीना लगा उनको समझाने को. So मुझे लगता है कि solutions कितने भी हो, I think उनको implement करना और scale करना is also quite a challenge, right? तो हाँ, तो मुझे लगता है कि HCL TechB या internship या फिर business blasters which I know about, Udhyam and otherwise are the solutions that we need to sort of look at, right? लेकिन वैसे भी हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो मैंने यूथ बिजनेस प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत सुना है, तो वुड लव टू नो मोर, एंड आई एम श्योर आवर लिसनर्स विल आल्सो वुड लव टू मोर कि क्या है ये. आई एम सुपर एक्साइटेड. मैं बोलना शुरू करूंगा तो चुप कराना पड़ेगा आपको, वो काम मैं करूंगा, डोंट वरी. नो, आई फील कि दिस सिंपल आइडिया ऑफ यंग पीपल आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, गेटिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑफ जनरली अबाउट 5 kids, and then creating a business, creating a business project around it, right? With sometimes a small nudge. So there are governments like Delhi, MP, Telangana जो 2,000 रुपए हर बच्चे को दे रहे हैं कि यार चलो कुछ करो. And the kind of things young people create, right? It's blown me away, but it has continued to inspire everybody who has gone and met them. कि मतलब ये 15-16 साल के बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं, एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग थिंग्स बट देन गोइंग ऑन एंड सेलिंग एंड गोइंग ऑन टू क्रिएट प्रॉपर लार्ज स्केल बिजनेसेस आउट ऑफ इट हैज़ बीन लाइक वेरी वेरी इंस्पायरिंग. आई विल गिव मे बी जस्ट 2 quick examples, right? आई हैव बीन सुपर इंस्पायर्ड. अभी आंध्र प्रदेश में, रूरल आंध्र प्रदेश में 9th standard में 2 girls created a snake detector.
who thinks of that problem? कैसे दिमाग में आता है भाई? हाँ. तो but when you empathize with them, you realize कि भैया फार्म में अगर रहते हो, रात को It's a बाहर day to निकलना. day their life. Exactly, right? And it is something that leads to 75,000 deaths Yes. in India per year. So for 9th grade girls to solve that problem, right, to me gives me goosebumps. I feel like this is what young people can do if you just take the dhakkan out. हाँ. कि उनके बंधन खोल दो, they will fly. So that is what we've done with youth business projects, and again it gives me goosebumps. I can keep talking about it. So this is one of the other things that we will try and showcase at Prayaas. I think I am very excited to see Jagriti Yatra being showcased at Prayaas. I have known of Jagriti Yatra for some time. Actually जब मैं वही फ्लिपकार्ट छोड़ रहा था, सेक्टर में घुस रहा था, उसके भी पहले आई वॉज वंस अ स्पीकर. जब तो जागृति यात्रा इज बेसिकली अ ट्रेन जर्नी, राइट? सो अ ट्रेन फिल्ड विद यात्रीज हु वांट टू एक्सप्लोर इंडिया, go from one place to another in India, and एक जगह रुकती है, and then you have some interactions, and then you get back on the train, you go to the next place. So you see a lot of India, and you interact with a lot of people. So I'd spoken to yatris, I think in 2014 or 15. और उसके बाद when I met some of them, कि the kind of things they have done because of that awareness and exposure has been amazing. पर बाकी दुनिया से पूछता हूँ, किसी को जागृति यात्रा के बारे में नहीं पता. सो जागृति यात्रा की जागृति नहीं हुई है, राइट? मतलब जग को नहीं पता चला है कि जागृति यात्रा जैसी कुछ है. उनको ही यात्रा पे ले जाने का जरूरत है. एंड मे बी वी कैन से हमारा जो प्रयास है, इट इज लाइक जागृति यात्रा ऑफ सॉल्यूशंस. एग्जैक्टली इन दैट जो हम शोकेस करेंगे. एंड आई थिंक what you said, right, this year being focused on solutions and showcasing them and like really shining the light so that more and more people become aware and they get celebrated and they get to what they deserve. Like this is what the solution can be, and how many more people, just like your niece is doing the HCL Tech Bee, so many more people can do it. So many more people can do the Jagriti Yatra or the youth business projects. ये सब होने लगे. That's my hope. नहीं, similarly इसी वक्त हम प्रयास में we are also going to showcase apprenticeship. There is a national apprenticeship promotion scheme. लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए समीना बानो हमारी फ्रेंड जो है, इज सच अ ग्रेट वर्क शी हैज़ डन थ्रू राइट वर्क फाउंडेशन टू ब्रिंग इट अलाइव, यू नो, एंड ऑल. एंड अप्रेंटिसशिप के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही होता है, इंडस्ट्रियल फ्लोर पे ही काम करते हो, अगर एम्प्लॉयर ने हायर कर लिया कुछ तो हो गया तो एम्प्लॉयर जेल में जाएगा. काफ़ी सारे sort of misperceptions है जो ये ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज थ्रू दिस इनिशिएटिव ऑफ अप्रेंटिसशिप ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है. तो वी आर होपिंग दैट वो उसको शोकेस करके हम उसको और भी आगे ले जा पाएंगे. सिमिलरली फ्लोर वर्क करके जो कि गिग इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करें. फ्रैंकली यू नो जब भी गिग इकोनॉमी का नाम आता है तो मुझे लगता है हाँ वो तो डिलीवरी, फूड डिलीवरी करना है या कुरियर, यू नो, ये करना है एंड ऑल दैट. लेकिन जैसे मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, एज आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट इट, कि गिग इकोनॉमी इज मच मोर देन दैट. यू नो, देयर इज अ डेटा एंट्री जॉब्स, देयर इज अ मार्केट रिसर्च जॉब्स, देयर आर कस्टमर सर्विस जॉब्स एंड अदर थिंग्स टू, which are very helpful when you are young. You are looking for some, you know, side income. You are looking to get your first job. You're also looking to also supplement your education with something. और बहुत बार first job मिलता नहीं है because आपके पास experience नहीं है. लेकिन किसी ने first job दिया नहीं तो experience आएगा कहाँ से? So how do you break these boundaries? So all these gig economy jobs are really very very critical. So I'm really happy कि Flow Work will be, you know, showing us the path. How it can be useful for the young people so that they can pursue their education as well as pursue some, you know, earning opportunities and learn from real life as well. No, super excited about this showcase focus of solutions, right? Problems के बारे में सबको पता है, लेकिन there are these amazing solutions which are scalable that can solve a bunch of challenges in India. Them being showcased at Prayaas this year, very very excited. If you happen to have any solution that fits in line with some of the solutions that we've talked about, that serves the youth, that is scalable, please come to Prayaas. और इस बार हमने जैसे मिकिन बहुत कोशिश की है कि यूजुअल सस्पेक्ट्स को स्टेज पे न लाए, राइट? नहीं तो कॉन्फ्रेंस का
ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग, ये नहीं तो कॉन्फ्रेंस का टाइटल समझ के समझता है कि इसमें स्पीकर कौन होंगे, टॉपिक्स कौन का होगा, राइट. सो वी आर ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम दैट कि यूजुअल सस्पेक्ट्स को नीचे रखें, लेकिन जो हेडमास्टर्स है, ट्रेनर्स है, टीचर्स है, यंग पीपल है जो कि एक्चुअल में काम कर रहे हैं, हमारे फील्ड वर्कर्स भी है, और उनको शोकेस करें, लेट देम शेयर व्हाट दे आर सॉर्ट ऑफ गोइंग थ्रू. और हम तो फेलियर फाइल्स भी शोकेस करने वाले हैं, क्योंकि हम जो भी करते हैं बहुत लगते रहती है फील्ड में तो एंड ऑल, एंड 8 out of 10 times it is you always keep learning and improvising. So I'm looking forward to the failure files as one of the session as well, where we will be learning much more. Personally, for me, like this last 2-3 months of working with you and the Lahi team and the Udhyam team for Prayaas has been very, very rich and fun experience. बहुत मजा आया है, right? कि to constantly hear thoughts about कि हाँ ये usual suspects को stage पे नहीं लेके जाना है, right? जो stage पे नहीं जाते हैं उनको stage पे लेके जाना है. So like invert the normal, right? As in जिनकी बात हमको, we should be listening to youth, so they should be on stage. We should be talking about failures. So we have failure files. I think even for me the idea, and I don't know कितना हो पाएगा प्रयास में, कि we are talking about learning by doing. So the event should also be about doing. तो showcase के अंदर like other doing experiences कि audience जाके सिर्फ देख नहीं रही है, they are actually getting to do stuff in the stalls. My hope was and still is कि आपको stall में काम करके अपना lunch कमाना है. हाँ, 3 स्टॉल पे काम नहीं किया तो लंच नहीं मिलेगा. Exactly. So नहीं तो खुद का लाओ. Because I think we have to make this experiential, right? This dignity of actually doing things. और उसमें जो मज़ा आता है वो कैसे हम experience करवा पाएं लोगों को is what we are hoping कि प्रयास करें. The intention is that we are a collective trying to create public good for the country, right? And possibly for the world. And hence the focus is on the solution. कि उसके पीछे कौन सी organization है, एक है, 5 है, can this solution become open source and be adopted by many people? Exactly. Is what the hope is. And I hope that we can keep this intention alive, right? As Prayaas grows, मतलब अभी अपने दोनों कर रहे हैं, these 2 organizations, I am hoping that this becomes a larger collective of 6, 10, 15, 20 organizations, and the intention grows, which is, it's not about the organizations, it is about the solution. उसका impact क्या हो रहा है, उसमें क्या क्या failure हो रहे हैं, are we really learning from those? वो होने लगे. हमारा ये प्रयास है. हमारा ये प्रयास है. So Raj, when we discuss skilling and youth, we generally only see it from the supply side and like the education NGOs and skilling organizations get together, right? Do you think that's enough? Absolutely not. Actually, मुझे लगता है कि अभी तक के जो भी attempts हुए हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में, या जो पॉपुलरली टीवेट बोला जाता है, टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, most of the time they haven't achieved the desired result because industry has been absent, in the whole process. Industry in the sense employers, let's put it, employers. Industry यानी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा फैक्ट्री वगैरह है, but in general employers are absent in that conversation. And right from, क्योंकि at the end of the day what we are looking for is that they are meaningfully employed or they start something on their own. Right. So bringing them into the conversation and making them as an equal part of the conversation is very, very critical, and not just as a sponsor कर दिया coach, and all that, वो तो करते हैं, लेकिन can they provide internship opportunities? Can they provide sort of input for formulating the curriculum? Can they also provide what is coming after 5 years? At the end of the day जब आप पैसा कमा रहे हो तो आपको पता है कि 5 साल के बाद क्या होने वाला है. Right. So who can be a better person to sort of tell us that than the industry sort of themselves. और वो ये भी है कि अगर उन्होंने पहले से, if you are able to involve them right from earlier days, they can also see what kind of talent is coming in the market and shape the whole narrative around it, or what is needed in that. So absolutely, no doubt about that. No, absolutely. I think if industry starts working more closely, right, we can also hope that industry
tries to figure अच्छा किस तरीके से 11th 12th में internship हो सकती है. हाँ. Many companies find it very challenging. These are young students, क्या ही करेंगे and इनकी responsibility कौन लेगा and so on. But these are problems that can be solved. So as industry starts working more closely and joins Prayaas, I think we can together create new ways in which young people can be working and earning together, and that can pave a big, large path. Yeah, and I think just talking about the opportunities for young people to start working, right? I think we have a young person who started working at the age of 16 in the 10th grade, right? And has already done many different things. So let's maybe hear from her what she has been able to do and what her journey has been. इन त्रिवेणी जिसकी आप बात कर रहे हो वो तो मेरा इंस्पिरेशन है. जब भी मैं तो बोलता हूँ शी इज लाइक धमाका. जब भी बात करते तो त्रिवेणी को बुला सकते हैं. त्रिवेणी आपसे मिलके कितना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता. त्रिवेणी, मैंने सुना है कि आपने इतनी कम उम्र में बहुत सारे जॉब्स किए हैं, तो आप बताएंगे कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और आप कहाँ से अपना इतना इलस्ट्रेटिव करियर की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? मैंने 10th स्टैंडर्ड से जॉब करना शुरू किया था जस्ट फॉर मुझे खुद के लिए कमाना था. अच्छा. तो मैंने 10th स्टैंडर्ड में वो क्यों खुद के लिए क्यों कमाना था? क्योंकि मुझे लगता था कि अभी मैं बड़ी हो गई तो खुद का खर्चा अच्छा, देख सकती हूँ. आपको लगा कि बड़ी होगी. हाँ, और अच्छा, मम्मी पे कितने दिन डिपेंड रहूंगी मैं. हाँ. वैसे तो और मेरी 2 बहनें भी है. हाँ. तो उनकी पढ़ाई अगर मम्मी कर रही है तो एटलीस्ट मैं ट्राई कर सकती हूँ कि खुद का खुद निकाल सकती हूँ. सो मैंने 10th स्टैंडर्ड से काम शुरू किया था. तो मैंने पैकिंग का वर्क स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम 10th में. अच्छा. तो हाँ, तो क्या पैक कर रहे थे? वो जो कूड़े या पापड़ रहते हैं ना, अच्छा, पापड़. उनकी पैकिंग करके काउंट करके वो सील कर देते. 10th के बाद मैंने साइंस साइड ली थी. 11th 12th करते करते मैंने और एक जगह पे जॉब किया. वहाँ पे सेम वर्क था बट वहाँ पैकिंग नहीं थी, सिर्फ काउंट करना था कितना मटेरियल आ रहा है. अच्छा. और वो कितना जा रहा है कितना आ रहा है, मतलब कंपनी से कितना आ रहा है और जा रहा कितना है वो करना था. तो उसके साथ ही 11th 12th में हमें इंटर्नशिप करनी थी क्योंकि मैंने रिटेल सब्जेक्ट लिया था वोकेशनल में. सो उसमें 80 आवर्स की इंटर्नशिप करनी थी. तो मैंने ऑनलाइन इंटर्नशिप की थी. वो पेड नहीं थी. हाँ, बट मैंने की थी जस्ट फॉर एक्सपीरियंस. हाँ, एक्सपीरियंस करने के लिए. पैसा कमाने में तो बहुत आप ये लगते हो, पेड नहीं तो भी किया आपने? हाँ, क्योंकि वो कॉलेज था, कॉलेज का प्रोजेक्ट था तो मुझे वो करना ही था. 80 आवर्स थे. तो मैंने वो ऑनलाइन इंटर्नशिप की थी. नागरिका करके एक एनजीओ है उसके साथ. तो उनका एक प्रोजेक्ट था कि छोटे छोटे शहरों से, तो उनमें उनको छोटे शहरों के लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी और उसके साथ उन शहरों में क्या प्रॉब्लम्स है. उनका मेन ऑब्जेक्टिव वही था कि वहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या फेस कर रहे हैं, वहाँ क्या नया है जो लोगों को पता नहीं है, इनके बारे में जानना. सो उसके लिए हमें कॉल पे इंटरव्यू करना था लोगों का. तब मुझे नहीं समझ रहा था कि कैसे बात करूँ, क्या करूँ. तो तब जब मैंने स्टार्टिंग में कॉल किए थे तब 2 मिनट से ज़्यादा नहीं जाते थे. बट मुझे पता चला कि अगर हम अपने बारे में एक्सप्रेस करें तो लोग खुद ही इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार होते. तो उसके बाद क्या हुआ त्रिवेणी? हाँ, तो वो इंटर्नशिप 80 आवर्स की थी तो मैंने वो कंप्लीट कर ली. तो मैंने ओवरऑल 15 इंटरव्यूज किए थे. अच्छा. हाँ, उसमें से पहले 2 तो वेस्ट गए थे, तो टोटल 13 सक्सेसफुल हुए थे. तो उसके बाद क्या सीखा ये सब करके? हाँ, उससे मुझे ये समझ में आया कि हम सिर्फ काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें उसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए. हमें उनको लोगों से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें क्या वर्क करना है, इसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए. सो हाँ, उसमें वो इंटर्नशिप में मैंने ये सब सीखा. तो उसके बाद मैंने 12th हो गई मेरी. और मैंने BCS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया. फर्स्ट ईयर में थी और वोकेशनल सब्जेक्ट मुझे लैंड हैंड इंडिया से था. तो उनकी तरफ से स्किल मित्रा के लिए पूछा गया था. तो मैं वहाँ पे, उन्होंने वो पेड था तो वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में सिखाने वाले थे, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया. और वो स्कूल करते करते तब दोनों संभालते हो? हाँ, तो दोनों हो जाता है. हाँ, हो जाता था मैनेज, क्योंकि वो ऑनलाइन था तो वर्क फ्रॉम होम था. तो जब भी मैं कॉलेज से आती थी तो वो अपने टाइम के हिसाब से मैनेज हो जाता था, क्योंकि उनका कुछ कंपलसरी नहीं था कि तुम इतने टाइम करना है, इसी वक्त करना है. तो क्या काम किया तभी उसमें? वहाँ पे डेटा अपडेटिंग. अच्छा. और हाँ, स्टूडेंट से बात करना
उनके एक्सपीरियंस जानना, वो सब वहाँ पे किया मैंने। उसके बाद मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, BCS कंप्यूटर साइंस में। सो अभी मुझे टेक्नोलॉजी फील्ड में इंटर्नशिप चाहिए थी। सो मुझे लकीली वहीं पे इंटर्नशिप मिली है। हाँ, टेक्नोलॉजी के टीम के साथ। सो मैं वहाँ पे प्रोडक्शन, टेस्टिंग या डेटा अपडेटिंग, अपलोडिंग और वो सब लाइव प्रोजेक्ट है उन पे वर्क कर रही हूँ। तो कभी आपका ऐसा नहीं लगता, आपके तो फ्रेंड्स वगैरह मूवीज को जाते होंगे, पिकनिक्स को जाते होंगे, ये कर रहे हैं, और यहाँ तो आप एक के बाद इंटर्नशिप करने जा रही है, राइट? Yes. तो आपको ऐसे मिस नहीं होता कुछ? होता है ना, बहुत मिस होता है। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, वो नहीं हुआ मेरे से तो कुछ तो मिल रहा है ना, मुझे एप्रिसिएशन मिल रहा है। मैं अलग अलग जगह जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, वो भी अच्छा ही है। और एक हाथ दूसरी बार मैं भी ट्राई करती हूँ जाने का, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं जाना होता। सो मैं ट्राई करती हूँ और जाने की कोशिश करती हूँ। चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच त्रिवेणी आज आने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और होपफुली विल गेट टू नो मोर अबाउट योर मोर एंड मोर इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स इन इयर्स टू कम, और बहुत बड़ी आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बनोगी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। सो राज, तो आपको 15 साल हो गए, राइट, इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू ड्राइव वोकेशनल एजुकेशन, बट अ रिपोर्ट जस्ट केम आउट 2023 एंड सेड कि यार only 5.6% of our kids are enrolled in vocational education. That number is not increasing, right? What do you think are the challenges? क्यों नहीं, like why are we not as a country able to drive a vocational education? I think सबसे पहला तो यही है कि हम हमेशा सोचते हैं कि vocational education is for maid's son, not for my own son or my own daughter. हाँ, बट एक इंटरप्ट करूँगा, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, कैसे बदलेगा ये? एब्सोल्युटली बदलेगा अगर हम अर्ली एज से शुरू कर पाए इन दैट, यू नो, क्योंकि और जो वोकेशनल एजुकेशन ये कोई नई बात नहीं है हम जो करें, यू नो, गांधी जी ने जो नई तालीम की बात की, बुनियादी शाला की बात की, तो वही था ये। तो हम जो बात करें, इट इज लाइक यू नो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। आई एम सॉरी, गांधी जी ने तो यू नो दारूबंदी बट आई थिंक द होल पॉइंट इज कि इट इज अबाउट कि व्हाट वर्क इंटीग्रेटेड, यू नो, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग एंड अदरवाइज। और हमने ये भी देखा है कि जो लोगों ने स्कूल में कुछ स्किल सीखा है वो जिंदगी भर उनको भूलते नहीं है। एंड आई थिंक ये भी है कि हमें नैरेटिव बदलना चाहिए कि vocational education is not only for vocation, only for, you know, job. It is as much about life skills, you know, in that. You know, लोग 21st century skills की, you know, बात करते हैं. Actually, I always think 18th century skills were much more difficult. You know, 21st century में तो मेरा Google Map बंद हो गया तो मैं घर भी नहीं पहुंच पा रहा, you know, in the whole process. तो vocational education is a great way to do life skills as well. आप gardening करोगे तो बहुत पेशेंट बनोगे कि 6 महीने तक आप पौधे को पानी दे रहे हो, तो बाद में कुछ मिला तो मिला, राइट? नहीं भी मिलेगा तो हाउ टू हैंडल फेल्यूर। इनफैक्ट हमारा सबसे पहला रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट यही रहा है कि हम इसको अप्लाइड लर्निंग बोले और वोकेशनल एजुकेशन न बोले, क्योंकि एज सून एज यू से दैट वो पूरा बैरियर, यू नो, शुरू हो जाता है, राइट? आई होप आप ये रीब्रांडिंग कर पाओ, बिकॉज आई फील दैट इज गेटिंग इन द वे। लाइक वी हैव वन पर्सन विद अस who had to convince her family a lot, right, around acceptance towards the kind of things she wanted to do, and like her journey of being able to convince her family and being able to go from like a lot of confusion in her own life to become clearer. I think we should hear Neha, and can we call Neha? Hello Neha. Hi sir. अभी आप अपने बारे में मुझे और हम सबको बताओगे कि अभी आप क्या कर रहे हो? मैं अभी TY BBA परसिंग कर रही हूँ, तो उसमें 3 स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, तो मैंने उसमें से HR स्पेशलाइजेशन लिया है, तो मैं लैंड हैंड इंडिया में HR इंटर्नशिप कर रही हूँ। मेरा कॉलेज करते करते। यस। और लैंड हैंड इंडिया के बारे में कैसे पता चला आपको? तो मुझे 9th-10th में वोकेशनल सब्जेक्ट था मल्टी स्किल रिटेल, उसमें से मैंने मल्टी स्किल चूज़ किया, मुझे ज़्यादा मल्टी स्किल सीखने थे। तो क्यों सीखने थे ज़्यादा मल्टी स्किल? क्योंकि मुझे और नई नई चीज़ें जाननी थी कि और क्या क्या होता है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है, और उसमें इंटर्नशिप करनी थी 8 इयर्स की। तो कोविड की वजह से मैंने वो इंटर्नशिप ऑनलाइन की। तो यस, तो उसमें से भी मुझे बहुत कुछ सीखना मिला। 9th में जनरली बच्चे ये नहीं करते हैं, तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपको ये करना है?
तो वो 9th में हमें कंपलसरी सब्जेक्ट था वो। हाँ। बट हमारे जो अगले वाले बैच के लड़के मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, तो वो बताते थे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, हम ऐसे प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा हो रहा था मैं कब 9th में जा रही हूँ और मुझे सब प्रैक्टिकल्स करना है, सब सीखना है, स्किल्स, तो ऐसा है। तो 9th-10th में मल्टी स्किल किया, फिर 11th-12th में क्या किया आपने? उसमें से एक सब्जेक्ट चूज करना था। हाँ। तो मैंने फूड प्रोसेसिंग लेके लिया और इंटर्नशिप फूड किया। प्रोसेसिंग क्यों किया? मुझे इंटरेस्ट था फूड प्रोसेसिंग करने क्या में। क्या करते थे आप फूड प्रोसेसिंग में? बेकिंग करते थे, पिज्जा, डोनट्स कर रहे थे, पिज्ज़ा बनाते थे। तो जब आपने ये लिया तो मतलब घर में सब क्या बोलते थे कि हाँ ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पहले तो घर में कुछ किसको पता नहीं था ज़्यादा ये क्या है, क्या कर रही है तू, ऐसे। तो मैंने उनको समझा, ऐसे मैं मल्टी स्किल सीख रही, तो अलग अलग स्किल्स सिखा रहे मुझे दिशा दे रहे कि तू ये कर सकते, तेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इसमें है। उनको भी समझ आ रहा है तो उन्होंने भी मुझे हाँ ठीक है तू कर ले। जब उनको समझ नहीं आता था तब वो आपको अलाउ करते थे? हाँ, मेरे सर से बात करते थे वो। अच्छा। कि क्या है ना, कि तो सर बताते थे उनको ऐसे ऐसे है। आपने मल्टी स्किल ट्राई किया, उसके बाद फूड चूज़ किया, उसमें कोई कन्फ्यूजन था आपको कि अच्छा क्या करना है क्या नहीं करना है? नहीं, ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं था, Food बट मुझे करना फूड था। करना था ऐसे। हाँ। हाँ। और फूड किया और फिर वहाँ से फिर ये एचआर का कैसे हुआ? वो एचआर में इंटरेस्ट है ये कैसे पता चला आपको? मैंने सोचा बीकॉम तो बहुत बच्चे कर रहे हैं तो बीबीए कर लेती हूँ, एचआर कर लेती हूँ, तो ऐसा मैंने एचआर ले लिया। तो एचआर में क्या कर रहे हो अभी आप? एचआर में अभी मैं एम्प्लॉयज़ का सीवी ऐसे शॉर्टलिस्ट, मतलब मैम करते हैं शॉर्टलिस्ट, तो मैं देखती हूँ कि कैसे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं वो, सामने वाले से बात कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन वो इंटरव्यू कंडक्ट कैसे करना है। आगे क्या सोचा है? इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद मेरा चल रहा है एमबीए करने का, तो मैं अभी सर्चिंग कर रही हूँ कि एमबीए में बेस्ट कॉलेज कौन सा है एचआर के लिए। तो ऐसे सर्च आउट कर रही हूँ। और एमबीए करके फिर क्या करना है? एमबीए करके जॉब करना है। यस। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank थैंक you, यू सो sir. मच। थैंक यू सर। So, लेकिन आप ये व्यापार की बात करते रहते हो, यू नो, और मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ कि एक अगर प्यून का भी जॉब का होगा तो एक सीट के लिए मैंने 4000 एप्लीकेशन आते हैं। हाँ। राइट। तो हमारी कंट्री जहाँ ये जॉब के लिए इतना सारा एस्पिरेशन है, जॉब के लिए इतना वांट है, हाँ। तो कैसे कन्विंस करेंगे आप खुद का व्यापार करो, you know? तो वो तो काफी जटिल लग रहा है मुझे, यू नो। ऐसे तो आपका कैसा जर्नी रहा है उसमें फिर? आई थिंक मुश्किल तो है, और स्पेशली अगर आप बड़े हो गए हो, राइट, आप कॉलेज में आ गए हो, डिग्री ले ली है, उसके बाद आपका माइंड सेट है कि मेरे को डेस्क जॉब करना है, क्या मतलब बहुत कम चीज़ें करने को तैयार हो आपको सरकारी नौकरी चाहिए, राइट। आई थिंक इसीलिए कोशिश रही है कि स्टार्ट एट अ यंगर एज, राइट। सो सेम थिंग जो आपने कहा था कि स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट यंगर एंड गेट द टेस्ट ऑफ सक्सेस एंड काम करके आगे बढ़ना एट एन अर्ली एज। वो जब बच्चे कर लेते हैं ना, दैट ओ आई वॉज एबल टू मेक समथिंग, आई वॉज एबल टू सेल समथिंग, मेरा ग्रोथ हो रहा है रेवेन्यू में, राइट, वो फिर पीपल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये। आई थिंक हम दोनों मारवाड़ी हैं, वी हैव सीन enough of this in our extended families, right? As in, I have a lot of cousins, and most of them, just like you sat at your father's shop, तो अपने आप सीख गए थे, right? उसको सिखाना नहीं पड़ा था किसी को. So it's very easy then, and even though you got into a job, finally you had the confidence to start Lahi. I feel that's exactly the journey we are hoping for. कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंसान एंटरप्रेन्योर बने और स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद ही बने, पर वो अंदर कॉन्फिडेंस हो कि जब ज़रूरत पड़ेगी, जब मन करेगा, आई विल स्टार्ट समथिंग. आई थिंक बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आवर एजुकेशन सिस्टम एक्सेप्ट फॉर द टॉपर्स मेक्स एवरीवन फील लाइक इडियट्स कि तुम गधे हो, तुम फेलियर हो, तुम्हारे बस का नहीं है, राइट. लेकिन टॉपर तो सिर्फ वो टॉप 1%, 1, 2, 3 रहेंगे ना. बाकी जो 50 बच्चे हैं, राइट, दे हैव इमेंस पोटेंशियल एंड एज दे गेट इनटू द रियल वर्ल्ड दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू. एंड स्पेशली इन बिजनेस आई हैव सीन दैट पीपल जो लास्ट बेंचर्स थे ना, they end up वो खुराफाती दिमाग होता है, they end up creating a lot of value. It's just that
the system has scarred them कि तुम गधे हो. हाँ. I feel by helping them do these projects early in life, right, we can help them see that हाँ ठीक है, maybe academics I am at this level, but there are other things in life which I can do much better. So I feel ये होगा तो, and then these people will create jobs. तो अभी the first few batches of youth business project job first year second year में है, वो 50-50 70-70 लोगों को employ कर रहे हैं. I'm like, 2 years of business they have gotten to employing 70 kids. So I think job creation यही लोग करेंगे, right? That's my hope. Let's hope so, and यही हमारा प्रयास रहेगा. चलिए. So Raj, who should come to Prayaas? लेकिन मुझे तो लगता है कि even if whoever is remotely thinking about youth, you know, in that, everybody should join. So whether it is a parent, whether it is a teacher, whether it is a policymaker, whether it is a funder, whether it is organizations which are working in the field of youth development, and of course the young people themselves, क्योंकि आखिर तो हम उनके लिए ही कर रहे हैं. And I think this is a great opportunity to sort of get to know the various solutions and hearing it for the from the horse's mouth, as they say, क्योंकि हम लोग inspiring stories by the youth भी बताने वाले हैं. तो जो भी आना चाहता है, सबका साथ सबका विकास. No, and I think also repeating the invitation to the industry, like if you intend to build a workforce that has young people in it, Prayaas is the place to come and like really listen to and get to know what young people want, what their aspirations are, and to be able to design work for them. So I hope industry also is able to join Prayaas and help us co-create what we want to. With that, thank you Raj. What an amazing time. मतलब हमेशा आपके साथ बात करके खूब हंसने को मिलता है and खूब सीखने को मिलता है. So thank you so much. Thank you for मेरा for becoming my first sort of part of the experience of this whole podcast and other things. So जिंदगी में पहली बार कर रही हूँ. So thanks for bearing with me and being a great partner to make it happen. बहुत मजा आया. Thank you.